A picture can tell 1,000 words. We all have heard this sentence for many times. Some pictures not only tell the story but also change the world. Some of these pictures you are just watching. The art is defined as a representation of one's feelings and emotions. I believe firmly that humanity is based on that the very creation of life itself is based on the artistic process of how cells and genes and everything move together. And the earth, the plant even. You have trees growing in the forest. They send out their roots, and you have these beautiful fungi that work in between the roots. This is also something quite fascinating. The trees know when another tree is suffering, and they harmonize somehow through the fungi to send nutrients or help to that tree that might be suffering in the forest. This is how we have to work as a humanity, connecting ourselves, and I think the artistic process is integral to that. In developing world, governments with limited capitals and damaged by poor governance have failed to provide development for all of their citizens, due to which alternative forms of development have been developed, and non-governmental organizations have been increasingly encouraged as means through which the gap between citizens' needs and existing services can be bridged. Over a century, humanitarians and their organizations have used imagery and the latest media skills to raise public consciousness and funds to improve human sufferings. Thanks to modern tools of communications, word of these tragedies reached the international community within the minutes, and in some cases, relief was mobilized within hours. This expression of assistance can greatly help a troubled country if it meets real needs. But it can also become a disaster when communication tools are used ineffectively and assistance has not been requested, or donor organizations or entities have misperceptions of what the needs are. Human beings have always understood things visually more than any other medium. We also like to communicate visually, and it makes us deliver our messages and emotions to the receiver in a much clearer way. This was started back in the cave age. कैमरा को यूज़ करते हुए आप बहुत ज़्यादा कहानियाँ बयान कर सकते हैं, आप बहुत चीज़ों को अच्छी तरह बयान कर सकते हैं, आप चीज़ों की हकीकत को इवन तब्दील भी कर सकते हैं। सो कैमरे के साथ खेलते हुए कहानी को बयान करना इज़ ऑलवेज़ अ फन। ये एक पेशा रहा है, ये एक शौक़ रहा है, लोग करते हैं, आज तक लोग करते आ रहे हैं। आर्ट ने जितनी भी डेवलपमेंट की या आर्ट के जितने भी जॉनराज आए, उसमें फॉर मी कैमरा इज़ द मोस्ट रियलिस्टिक टूल ऑफ टेलिंग द स्टोरी, क्योंकि कैमरे को यूज़ करते हुए आप बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ बयान कर सकते हैं जो एक्चुअल ग्राउंड्स पे हो रही थी। Our world has limitless horizons. Look up, down, turn in any direction, and you are met with unbroken cyclorama of imagery. The frame is a tool we use to break up this panorama into digestible pieces. The frame is a cropping device that snips away what we do not want the audience to see. कैमरे को यूज़ करते हुए आप उस हकीकत को बयान नहीं भी करते, आप बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा भी डाल देते हैं। आप किसी ऐसे एंगल से चले जाते हैं कि चीज़ होती तांबा है, दिखती सोना है। सो मेरा कहने का मकसद ये कि कहानी बयान करना कैमरा के साथ
एक बहुत ही मज़ेदार पेशा और लोगों का शौक़ भी रह चुका है और आज तक लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कैमरा दिखाने के साथ साथ छुपाने का काम भी करता है और बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे इदारे इस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा भी उठाते हैं. Just think about the frame as more than just a picture. It is combination of information. Obviously, some parts of information are more important than others, and we want this information to be perceived in a certain order by the viewer. Composition is the way how we do this. Through composition, we tell the audience where to look, what to look, and in what order to look at it. It is about guiding the eye and directing the attention of the viewer in an organized manner that conveys the meaning that we want to impart. कंपोजिशन वाला जो एलिमेंट है उसमें सपोर्टिंग एलिमेंट्स का यही रोल है कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन्हें इस तरह से प्लेस किया जाए कि वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट या इरिटेशन ना व्यूअर के माइंड में पैदा करें, तबीयत में पैदा करें. उनकी प्लेसिंग हम कैमरा एंगल चेंज करने से बेहतर कर सकते हैं, शॉट चेंज करने से, उसकी कंपोजिशन चेंज करने से बेहतर कर सकते हैं. If single frame has the power to tell the stories and change the world, then imagine what 24 frames in a second can do. There are many genres of video production like film, drama, music, ads, etc. But right now, we will discuss the cinematography of documentary productions. Documentaries around the world are used for the cause, ranging from melting glaciers to a hungry child lost home in military situation. All this is history and means a lot to the generations after centuries, who might research on us that how people lived in the 21st century and what were the problems faced by the humans. It is the same way humankind is doing on the generations before us. किसी भी तरह की ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, ख्वाह वो फिक्शन हो या फैक्चुअल हो, उसमें हम मैसेजेस कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं और उसमें हमारा टूल जो है वो ऑडियो वीडियो होती है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट या जो बुनियादी चीज़ है बिल्कुल वो ये है कि आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं. विद आपके जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका मैसेज क्या है. उसके लिए सबसे पहले आपने अपने आइडिया और उसके बाद स्क्रिप्ट पे काम करना है. जहाँ तक कैमरा का ताल्लुक़ है या साउंड का ताल्लुक़ है, वो तो टूल्स हैं. फिर उस बात को या उस मैसेज को हमने ट्रांसलेट करना है ऑडियो वीडियो फॉर्म में. तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट टूल एक बनता है. उसमें एक एक चीज़ जो है ना, आपके फ्रेम की, आपकी लाइट, आपकी कंपोजिशन, वो काउंट कर रही होती है और वो मीनिंग मुख्तलिफ दे रही होती है. एक ही सब्जेक्ट को आप मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ कंपोजिशन के साथ शूट कर सकते हैं, जिसके साथ उससे मीनिंग भी बदल रहे होते हैं. There are commonly accepted guidelines that define how visual information should be displayed to a viewer. As viewers, all of us who have grown up watching films and television have been trained over the years to observe, decode, and comprehend the various elements of the various shots used in motion picture creation. In other words, we may not consciously express it, but we know that certain images mean and how they make us feel. An adept filmmaker uses this dynamics between the shots and the viewer to tell better stories. मिसाल के तौर पे शॉट्स हमारे टीवी और फिल्म के जो हैं वो कन्वे करते हैं मायने. अब आप किसी को कमज़ोर बताना है नफ्सियाती तौर पर, तो आप अगर पीर सुहाबा के ऊपर चढ़कर इस्लामाबाद का शॉट लें तो इतना सा इस्लामाबाद नज़र आएगा. इसलिए जब आप किसी मरीज़ की शूटिंग कर रहे हैं, किसी को वीक बताते हैं, किसी को कमज़ोर बताते हैं, आप कैमरा टॉप एंगल पे ले जाते हैं, ऊपर से लेते हैं शॉट, वो वीक हो जाता है. लेकिन आप किसी को ताकतवर बताते हैं तो आंख के आगे हथेली रखने से पूरा आसमान गायब हो जाता है. आप कैमरे को लो एंगल पे ले आते हैं करैक्टर को हैवी करने के लिए. तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी ग्रामर है ना. Let us explore a sample case study in our documentary regarding the rules of composition and the impact it has. In this research work,
we selected a documentary of The Little Art, a development sector NGO which is working to provide facilities and opportunities to the kids who want to explore their artistic skills. This documentary is about their introduction and highlights their achievements. It has interview-based narration treatment. We reviewed this documentary and pointed out the problems only in terms of cinematography. Then we reshoot only the problematic clips in almost same environments. Then we screened both versions in front of the media professionals and got their point of view. मैंने देखा कि ये अच्छे और कुछ बैड शॉट्स का एक मिक्सचर है, तो वही बैड शॉट्स की रेशो कम हो जाए और बेहतर कंपोजिशंस या अच्छे शॉट्स की रेशो बढ़ जाएगी तो मैसेज और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट हो सकता है। कि एक लड़की को स्टूडेंट्स को दो बताया, फोरग्राउंड में जो लड़की थी वो डिफोकस थी, एक उसके साथ जो लड़की थी वो फोकस में थी। अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि उस लड़की पे वो स्ट्रेस दे रहा था, उसने डिफोकस कर लिया। मुझे यूं लगता है कि शूटिंग के वक्त वो जो लेंस उसने लगाया हुआ था उसकी वो निस्बत की वजह से वो डिफोकस हुआ है, उसकी कोई इफ़ेक्ट की वजह से डिफोकस नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पे इंटरव्यू करने की टेक्निक्स होती हैं, आप उन रूल्स को या प्रिंसिपल्स को ब्रेक तो कर सकते हैं मगर उसकी कोई रीजनिंग या कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन या फॉर द सेक ऑफ चेंज ना एक्सपेरिमेंट करें। हाँ, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपकी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर रहा है और वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है तो वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इंटरव्यूज़ में मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आई कि कंपोजिशन वाइज वो ठीक नहीं थे। तौर पे आपका एक शॉट है, वो बच्चा खड़ा है देख रहा है, अब वो बच्चा दूर देख रहा है, अगर वो फ्रेम के राइट के बजाय फ्रेम की लेफ्ट साइड पे होता तो उसका डिस्टेंस वेरी कर जाता। अब वो जो है वो डायरेक्टर की मुझे गलती लगती है, कैमरा जो है तो वो लो देख रहा है, हो सकता है इंटरव्यू लेने वाला बहुत ऊपर बैठा हुआ हो, लेकिन उसने ऐसी सिचुएशन, ऐसी लोकेशन, अपने सेट को भी एस्टेब्लिश नहीं किया तो अच्छा नहीं लगा। उसमें एस्थेटिक की कमी थी, ब्यूटी की कमी थी। ब्यूटी भी तो बड़ी चीज़ है ना, ब्यूटी भी बहुत बड़ी चीज़ है। ब्यूटी का ख्याल रखना ही ग्रामर है ना। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो यही बनाते हैं ना कि उसमें ब्यूटी होती है, अल्फाज को हम एक ख़ास तरतीब में लाते हैं, उसमें बेतरतीबी लगी है। उसका हेड रूम में भी कई जगह पे फ़र्क हुआ है, कहीं हेड कट रहा है, कहीं हेड रूम बहुत ज़्यादा आ गया है। I think the first documentary had a lot more of a heartbeat in it, flowing through an authentic speaking of some of the individuals that was powerful for me. I didn't see any problem with the angles as much as, even though there are photographic rules that you explained to me. The second also had some nice shots in it too. I mean, it was beautifully balanced and the message is clear from both documentaries. But I understand there are rules for photography, but I thought that sometimes when it's staged it can lose some of their direct comments. But I think it was, both are strong. There are some shots you added in the second that I really liked as well. मोस्टली मैंने देखा कि ब्लैंक फ्रेम है, बिल्कुल एज पे आपका करेक्टर जो है ना बोल रहा है। उनकी लुक रूम पे में कहीं पे मसाइल हैं। अगर ब्लैंक स्पेस आपने छोड़ी हुई है तो उसको किसी ऑब्जेक्ट या किसी रेलेवेंट चीज़ से फिल कर दें। इसमें भी थोड़ा सा केयरफुली काम इस तरह से लेना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सपोर्टिंग एलिमेंट सपोर्ट करने की बजाय वो मेन एलिमेंट बन जाए और आपके मेन सब्जेक्ट से आपकी तवज्जो हट जाए। ये मीडियम शॉट में है लेकिन इसका जो क्लोज आया लुक बदली हुई है। अब ये जो है ये कॉन्टीन्यूटी जंप आप कह सकते हैं, क्योंकि किरदार का एक कॉन्टीन्यूटी होती है। मैं अब इस साइड पे आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और अचानक आप एक शॉट लेते हैं कि मैं इस साइड पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो देखने वाले को चुभन होगी, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। इसका जो नेक्स्ट शॉट है उसमें इसकी लुक की डाइवर्शन बिल्कुल बदली हुई और बिल्कुल नेक्स्ट शॉट है। या तो उसके दरमियान बीच में कोई पैन शॉट होता, या कोई ऐसी चीज़ होती कि कॉज और इफेक्ट वाली बात है
कि इसने उससे मुतासर होकर अपनी लुक बदली है, इसी का शॉट है और कट करके इसी का शॉट आ रहा है, तो ये तो कोई जादू की फिल्म होती है कि ये ताजमहल और खाली रेत में ताजमहल आ गया। तो अगर हम जर्नली देखें, होलिस्टिकली, यूनिवर्सली देखें, तो ऑब्वियसली जिस भी चीज़ में आपने रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया वो चीज़ एक बेहतर मेयार की होगी, ठीक। लेकिन विद सेइंग दिस, बीइंग अ फिल्म मेकर, आई वुड से कि जब आप पूरी फिल्म के अंदर, आपकी 15 मिनट की फिल्म के अंदर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, आप हर चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, आप हर चीज़ को सेट करेंगे, हर चीज़ बना के प्रेजेंट करेंगे, तो वो फिर शायद जॉनरा ही चेंज हो जाए डॉक्यूमेंट्री का, वो शायद फिर शॉर्ट फिल्म कहलाने लगे, वो शायद डॉक्यू ड्रामा कहलाने लगे। No, it depends. Sometimes there's an artistic license that needs to be employed if the shot is not maybe perfectly centered, but it has all the elements of passion, and you can use it in different ways. You know, I think that can be an artistic license. I think that the authenticity of the moment comes first, but to work with it in the rules it's important, but it can also, I don't know how to juggle that, but I'm sure there must be ways to work with it. मशहूर एक हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं D.W. ग्रिफ्थ, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फिल्म्स। बहुत कुछ उन्होंने दिया है फिल्म, क्लोजअप उन्होंने दिया, लॉन्ग शॉट उन्होंने दिया, एडिट, ही वाज द फर्स्ट एडिटर, ही स्क्रीन को स्प्लिट उसने किया। उस जब टॉकी आई उसने फिल्म बनाई, तो बाद में उसने टॉकी फिल्म बनाना छोड़ दिया। तो किसी ने पूछा क्यों, तो वो कहता है कि 95% of the universe does not know English world population. Only 5% of the world population speaks English. Why should I make my film for 5%? Why not for 100%? So I don't need any dialogues. Because according to him, the photographs convey the story. चार्ली चैपलन ने टॉकी बनाना छोड़ दिया, उसने कहा फिल्म तो वो रेडियो बन गई है, मैं तो मूवी को तस्वीरों के जरिए बना रहा हूँ। साउंड अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें वो म्यूज़िक को इम्पॉर्टेंस देते थे, साउंड इफ़ेक्ट्स को इम्पॉर्टेंस देते थे कि म्यूज़िक एक लैंग्वेज है, साउंड इफ़ेक्ट्स इस लैंग्वेज हैं। एक डायरेक्टर ने दिल के धड़कने की आवाज़ को दिया था, धक धक, अपने म्यूज़िक उसमें, और कमाल हुआ। आजकल लेटेस्ट एक फिल्म है एन आर्टिस्ट, 3 घंटे की फिल्म है, एक डायलॉग नहीं है, ऑस्कर नॉमिनेट हुई है। दिस इज द ग्रामर, दिस इज द लैंग्वेज, नो डाउट दैट इंपॉर्टेंस इज देयर, दे टॉक थ्रू फोटोग्राफ्स। बहुत सारी जगहों पे, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू फ्रेम्स हैं, उस पर लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, वो रूल ऑफ थर्ड को देखेंगे, वो आई लेवल्स को देखेंगे, वो लाइटिंग सोर्सेज को देखेंगे, वो बैक लाइट को देखेंगे। रूल्स हैं, ऑल दिस आर रूल्स। जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन जब आपकी एक नेचुरल सी सिचुएशन बनी होगी, जहाँ पे एक चीज़ नेचुरल चल रही होगी, जहाँ पे आपकी इंटरफेरेंस उस चीज़ की एक्शन को चेंज कर सकती है, सो वो चीज़ आप दोबारा उसको करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग रूल्स को नहीं देखते। दुनिया में बेतहाशा टूल्स हैं, आपके पास साउंड है, आपके पास वीडियो है या इमेज है, टेक्स्ट है, आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं कम्युनिकेशन के। जब हम काम ही इन 2 मेजर टूल्स के साथ कर रहे हैं, फिल्म प्रोडक्शन या ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साउंड और इमेज। तो इनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना ज़रूरी है। तो कैमरा की जो अहमियत है या लाइटिंग की जो अहमियत है, उसका तो प्लेन जवाब यही है कि अच्छा कैमरा बंद कर दें और फिर वही बात कह दें। Deciding the placement of the subject through viewfinder is not a technical decision, it's an expressive one. Video documentation for humanitarian and development initiative is mostly happened in emergency, and the main focus is to just capture the incident, due to which grammar of the shots and basic rules of composition and framing are ignored. Cameraman on spot decides what to do. So it is more important that cameraman for documentary should be more competent than other sectors. Everybody is agreed that to capture the moment is more important, and following the rules helps us to communicate more effectively. So for effective documentation, it is crucial that camera operator is highly skilled and creative.
skilled not only in operating the camera but also following the basic rules of composition and framing in emergency situation. If the purpose is to educate people and inform them about the future hurdles and when the delivery of message is highly necessary, not in terms of delivery but with the same intensity and feel which the sufferer is undergoing, then extra precautions for these documentations should be taken.